Well, it was a clinical win for Peshawar Zalmi and a much-needed one considering they lost their last game. But what a performance indeed. What a bowling performance, and in terms of their batting as well. It was a good one for them. Babar Azam all smiles there. Darren Sammy with that hug. Wahab Riaz would be rather relieved. Shanaka was brought in. Remember, he was the one change that they made amongst the other changes. A bit of banter, obviously, with Naseem Shah and Babar Azam, but jubilation in the end for Peshawar Zalmi. This is how it's looking on the points table right now. Multan Sultans are still leading the charts, but then Peshawar Zalmi seem to have climbed that table a little bit. They've got 4 points because they've won 2 out of the 3 games that they've played. Quetta Gladiators would be disappointed. They've now lost 2 of the 3 that they've played because only the top 4 teams will qualify for the playoffs. Welcome to the Pitchside studio. A couple of changes were made by Peshawar Zalmi, and important changes because we've seen that they've won this game today. Usman Qadir was extremely integral to that win. He took those 2 crucial wickets in the game as well. I've been joined by Arooj Mumtaz and Usman Qadir himself. Usman, टीम में आप आए और आके छा गए, विकेटें भी ली, तो थोड़ा सा बताएं कि जब आ रहे थे मैच में तो क्या सोच रहे थे, पिच कैसी लगी, कंडीशंस कैसी लगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो टीम में आना, एक तो पीएसएल की टीम में एक जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, और दूसरा अगर आप रेगुलर टूर्नामेंट से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि जब आप 2 मैच या 3 मैच हो जाएं उसके बाद आपको लाइन अपने लेके आया जाए तो ज़्यादा थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर भी होता है। ज़ाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी लीग है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, सारे कैपेबल हैं खेलने के लिए, बट बड़ा मुश्किल होता है। बट ये था कि मुझे जब उन्होंने बताया कि मैं खेल रहा हूँ तो मेरा जो था सिर्फ ये कि मैंने अपनी वाइफ से बोला बस दुआ करना, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा बहुत प्रेशर मुझे खुद भी फील हो रहा है। तो बस ये है कि मैं जैसे ही मैं बॉलिंग के ऊपर आया मैंने अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अरूज, आपको क्या अच्छी चीज़ लगी आज उस्मान की बॉलिंग के बाद? कंट्रोल एंड सेटअप, और एज अ लेग स्पिनर बहुत अच्छे से ये पता है कि जब बॉल सही निकल रहा होता है तो फिर उस दिन आप 10-20 ओवर कर आ जाते हैं। और आज उस्मान का मोमेंटम कुछ इसी तरह का लग रहा था, क्योंकि जब विकेट आपको परचेस मिल रहा हो उससे और बॉल सही लैंड हो रहा हो, एंड दैट्स व्हाट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस ऑफ सेटिंग अप फॉर अ गूगली, जिस तरह से इसने किया। तो आज जो इसका कंट्रोल था और जो रिदम था, और फिर ऊपर से व्हेन यू गॉट दैट कंट्रोल, जिस कॉन्फिडेंस इन्होंने 2 लेग ब्रेक करा के गूगली से जेसन रॉय को सेटअप किया, वाज रियली गुड टू सी। उसी सेटअप की हम आप बात कर रही हैं, जिस तरह उन्होंने लेग ब्रेक कराई, उसके बाद उन्होंने गूगली कराई, और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट भी थी। जेसन रॉय को ऑब्वियसली जल्दी आउट करना जरूरी था, व्हिच इज व्हाई इट फीचर्स इन आवर स्विच्ड ऑन मोमेंट्स ऑफ द डे। एक लेग स्पिनर के लिए अरूज कितना जरूरी होता है एक प्लान के साथ विकेट लेना? प्लान तो हर ही बॉलर कर आता है, बट आई थिंक कंट्रोल जो हो ना वो लेग स्पिनर के लिए सबसे मुश्किल होता है। आई स्टिल फील इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट, बट व्हेन यू गेट इट राइट इट इज अ डे यू डोंट वांट इट टू स्टॉप। अच्छा, आप चलें उस्मान, आप बताएं इस सेटअप के बारे में, क्योंकि हम बात करें तो क्या सोच रहे थे जेसन रॉय की? जैसे मैंने कहा, it's important to get him out because he is somebody who can take the game away from you. जी बिल्कुल, जेसन रॉय एक बहुत डेंजरस प्लेयर है। मैंने जब पाकिस्तान से खेला था मैच अगेंस्ट इंग्लैंड तो जब मैंने पहला बॉल ही किया था तो उन्होंने रिवर्स स्वीप से स्टार्ट किया, तो मेरे जहन में वही था कि ये आते ही रिवर्स स्वीप जो है वो खेलेंगे। बट ये कि जेसन रॉय ने पहला बॉल जब खेला तो मुझे ये भी पता लग गया कि बॉल जो है वो टर्न कर रहा है, तो फिर मैंने बाबर से बात की कि मैंने कहा मैं इसको एक आउटसाइड ऑफ टर्म बॉल करता हूँ और लास्ट बॉल जो है वो मैं टर्न गूगली करूँगा। तो कहता तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। तो मैंने उसको 2 बॉल लेग ब्रेक किया और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो मुझे स्वीप शॉट या मिड विकेट की तरफ खेलेगा, तो मैंने इसको रॉन्ग वन किया। एक तो आप देखिएगा रॉन्ग वन जो मैंने किया वो तेज हुआ थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे भी था और वो सीधा गया विकेटों के, टर्न भी नहीं हुआ, तो बिल्कुल जो है वो सेटअप अच्छा हो गया उसके लिए। नहीं, प्लान तो आपका बहुत अच्छा था। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी द बैट्समैन एज वेल, कि वो क्या कर रहे हैं उन कंडीशंस में। अच्छा, अभी आप बीबीएल खेल कर आए हैं और वहाँ पे बड़ा अच्छा आपका बीबीएल रहा। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड डू यू थिंक दैट्स हेल्प्ड यू कमिंग इनटू द पीएसएल? बिल्कुल, जितनी लीग्स बंदा खेलता है एज अ क्रिकेटर, अगर मैं जितनी भी लीग्स खेलूँ, मुझे ये होता है कि
अब मोस्टली ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जो कहते हैं कि मैं सारे मैचेस खेलूं, तो अब अगर आप काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स देखते हैं कि जो सारे मैच खेलते हैं वो डे बाय डे अच्छे होते जाते हैं। तो आई थिंक कि मुझे जो एक्सपीरियंस मिला अभी बीबीएल में, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही वहाँ पे। मैं 10 मैच खेला, कोई भी मैच बाहर नहीं था, तो मुझे वो उस चीज़ ने हेल्प भी आउट किया है। मैंने उसमें चीज़ें भी सीखी हैं। और मोस्टली अच्छी बात ये होती है बिग बैश खेलने की कि वहाँ पे बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी होती हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से बॉलिंग कर सकते हो। आपने लूप से बॉलिंग करनी है, आपने लो ट्रजेक्टरी पे करनी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से बॉलिंग कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। स्टोइनिस की स्टोरी सुनाई दे, स्टोइनिस को कैसे आउट किया आपने वहां पे, स्टोनीज बता हुआ रहे थे ये आप। कि जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था तो मैंने बड़ी अच्छी 3 ओवर में बॉलिंग की हुई थी। 3 ओवर में मैंने कोई 17-18 रन दिए थे। स्टोनीज आया बैटिंग के लिए, पहला बॉल चौका, दूसरा बॉल चौका, तीसरा बॉल चौका, तो 3 चौके, सारे मेरे फिगर्स वो ख़राब हो गए। तो मेरे जहन में था वो, क्योंकि जब स्टोनीज के साथ मेलबर्न स्टार्स के साथ मैच था तो मैं वेरी फर्स्ट बॉल मैंने उसको रॉन्ग वन किया। मैं अपनी तरह से मैंने अच्छा बॉल किया कि बाउंड्री बढ़ी है, अगर मिड विकेट की तरफ मारेगा तो कैच ही है, तो वो सामने छक्का हो गया। तो मैं अगर वहाँ पे घबरा जाता या मैं ये कहता कि यार ये बॉल थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं या ऑफ स्टम्प्स के बाहर कर लेते हैं, तो फिर उसके माइंड में ये होना था कि इसने थोड़ा सा लेंथ खींच ली है। तो मैंने उसी लेंथ के ऊपर लेग ब्रेक किया, ऑफ साइड दी ऑफ स्टम्प, और उसने हिट मारी और वो खड़ी हो गया बॉल, खड़ा हो गया बॉल, तो उसमें वो आउट हो गया। तो उसमें ही इज इन माई पॉकेट नाउ। He's actually in your pocket, but it's so important because we're talking about leg spinners should back themselves, you know, कि obviously if जब हम कहते हैं कभी कभार डरते हैं हवा देने से, कभी कभार डरते हैं कि शायद बैट्समैन might take them on, but एक चीज जो हम सबको आज बहुत अच्छी लगी थी was your celebration, बड़ा थोड़ा एक इमोशनल मोमेंट भी था, तो उसके बारे में बताएं। आई थिंक कि कोई ऐसे कोई प्लान नहीं था, कोई प्रिपेयर नहीं किया हुआ था ऐसे। वो बस वो उस टाइम जो सेटअप किया वो आउट हो गया, तो फिर एकदम मेरे माइंड में आया, जैसे लास्ट टाइम वो जो स्लिप मैंने निकाली थी, तो वो उसमें ये है कि एकदम बस मेरे माइंड में है तो मैंने वो कर दिया। फिर तो वो मैंने अपने अब्बू को जो है वो ट्रिब्यूट किया है, बिकॉज़ मैं उनको बहुत मिस करता हूँ वो, क्योंकि जब वो ज़िंदा थे तो मैं ये सारी क्रिकेट वगैरह नहीं खेल पाया। तो आई विश कि वो, अब मेरी विश थी कि वो यहाँ पे होते, मुझे देखते वो मुझे, और मुझे जो है वो कॉन्फिडेंस देते और मुझे करेज भी करते। बट अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी का हिस्सा सबने जाना है, तो आई थिंक कि सबको तैयारी भी करनी चाहिए जाने की। अच्छा अरूज, इतनी बड़ी लेगेसी दैट ही इज कैरिंग फॉरवर्ड आसान नहीं होता when you are related to somebody who's given such performances for Pakistan, but it's nice to see कि इनका अपना एक सफ़र है, इनकी अपनी एक जर्नी है, and he's improving and he's sort of creating his own identity. You're absolutely right, Zainab. It's never easy because ना चाहते हुए भी comparison draw होता है. And especially when you do the same trait, it's not like he's an off spinner or he's a batter. He's doing the same trait in which Abdul Qadir Saab is a legend, okay? And there's absolutely no match to it. तो इमोशनल भी होता है, बट आई थिंक उस्मान जिस तरह अभी खुद भी बात करें, ही इज बिकमिंग कॉन्फिडेंट इन हिज ओन राइट, इन हिज ओन आर्ट, एंड ही इज डूइंग वे थिंग्स द वे दैट कम नेचुरली टू हिम. जो ख्वाहिशात जिनकी वो बात करें, ऑब्वियसली दैट बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर क्रिकेटिंग जर्नी, बट आई थिंक ही इज़ ग्रूमिंग एट अ राइट टाइम. एंड जिन अपॉर्चुनिटीज़ की इन्होंने बात की, वो जितनी इनको मिलती चली जाएंगी, उससे ही जो जिस कंट्रोल की और कॉन्फिडेंस की बात करें, एंड वेरी क्विकली विकेट टेकिंग ऑप्शन एंड लेग स्पिनर्स अराउंड द वर्ल्ड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर फर्स्ट 11s. प्रेशर होता है ये जो हम डिस्कशन हो रही है, कैरिंग दैट लेगेसी, डू यू और आर यू ओवर इट नाउ? नहीं, पहले होता था, पहले तो अब्बू जब थे तो उस टाइम होता था कि एक लेगेसी है। अब जब मैच में आ जाते तो बिल्कुल भी याद नहीं होता लेगेसी क्या है, बंदे को अपनी पड़ी होती कि अपने अपने फिगर्स कैसे ठीक करने, आउट कैसे करके देने। बट ये है कि है लेगेसी, बट मुझे ये होता है कि मैं कभी उनके नाम को ख़राब ना होने दूं, जो जितना उन्होंने मुझे सिखाया है उसको अच्छे तरीके से लेके चलूं, और इंशाल्लाह जो है जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी और रेगुलर खेलना स्टार्ट कर दूंगा किसी भी टीम से या पाकिस्तान से या कहीं पे भी, तो इंशाल्लाह आई विल प्रूव माई सेल्फ। पहले भी किया इंशाल्लाह और आगे भी करता रहूँगा। अच्छा, उनकी पर्सनालिटी जब हमको याद करते हैं तो ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, उनके साथ बैठ के हमेशा एक अच्छी डिस्कशन होती थी ऑन व्हाटएवर टॉपिक। बट आपके साथ उनका जो बर्ताव था इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, वो ज़रा स्ट्रिक्ट थे या डांटते थे या कहते थे कि तुम अपना करो? नहीं, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, और वैसे भी कोचिंग के अलावा भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो ऐसा होता था कि जब भी बॉलिंग के लिए जाना नेट्स के अंदर, तो कोई बॉल ख़राब हो जाना तो बड़ी डांट पड़ती थी। बट ये था कि वो प्यार भी ऐसे ही करते थे, सबसे ज़्यादा मेरे से ही प्यार करते थे घर में। तो ये है कि जब भी उन्होंने कोचिंग की तो उस टाइम तो लगता था कि यार पापा क्यों डांट रहे हैं, या मैं तो अपनी
कोशिश कर रहा हूँ, बट अब जब वो एक कहते हैं ना, बड़ों ने क्या है कि जब कोई बंदा इंसान साथ नहीं होता तब उनकी बातें याद आती हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं उन्होंने मुझे सिखाई हैं, फ्रेम कैसे यूज़ करने हैं, हाथ का क्रीज़ कैसे यूज़ करनी है, हाथ का फ्रेम कैसे यूज़ करना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कभी अगर मैं वनडे खेला या कुछ ऐसा टेस्ट क्रिकेट खेला तो मैं वो सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। चलें, खुशी होती है आपको देख के ग्रो करते हुए, इवॉल्व करते हुए, बट यू वन द गेम टुडे, सो यू कैन गो एंड एंजॉय moments with the team. Thank you so much. It's lovely to have you, Usman. Thank you. And yeah, fabulous win for Peshawar Zalmi. Like I said, lost their last game, but it was nice to see them make a comeback. We'll take a short breather and we'll be back just in a bit. Back on the pitch side show, and great win for Peshawar Zalmi, a much needed win in fact after that loss in that previous game. Babar Azam all smiles, and I've also been joined by Bazid Khan, who's all smiles as well. Baz, welcome to the show. पेशावर ज़ल्मी की बात कर लेते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी देख लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आज के जो रन्स थे वो काफ़ी थे? आई थिंक पहले 10 ओवर में मैच वो जीत गए पेशावर ज़ल्मी। फर्स्टली द प्रेशर दैट दे एक्सर्टेड थ्रू द फास्ट बॉलर्स, और फिर जो इनिशियल 2-3 ओवर उस्मान कादिर ने किए, विकेटें भी मिली और ऑल्सो रन्स भी नहीं दिए। तो even after those 10 overs, even after that great comeback, even after doing so many things right, फिर भी क्वेटा were behind the game. अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कि रिस्ट स्पिनर्स को डालना इज हेल्पफुल इन दिस लीग वगैरह, सो ओवरऑल अरूज आप ये कहेंगे कि एक जो एडिशन थी उस्मान कादिर की, ये चेंजेस होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट in the context of the game? Wrist spinners, especially where the modern game is, are always wicket taking options, and sometimes they can go for runs and sometimes they do the wonders for you, which Usman did. Again, आज उसकी जो कभी कभार उस पर थोड़ी सी डिस्कशन होती है उस्मान को लेके, खास तौर पे कि वो जब लैंड नहीं करता बॉल and he gets into that rut where there's a lot of short ones and then he goes for runs. But उसका confidence, उसका control जितना उसने groom किया है, and I still feel leg spinner, even if they go for runs, they bring about that one wicket जिससे फ़र्क पड़ता है. But आपने वही वाली बात की कि पेशावर ने फिर भी runs लीक किए end में, which still is a slight concern, but combination was much better. Combination was much better and batting combination was pretty good for them today. वो जो एक रॉबमन पावल और उनकी पार्टनरशिप हुई थी जेम्स नीशम की, that was always going to be crucial, which is why he features in our player of the match. जिमी नीशम स्पिनर्स तो उन्होंने रिवर्स स्वीप या स्लॉग स्वीप या strong sweep खेला है, और that has meant that he scored quickly on a pitch where the spinners were getting some support. बैज उस वक्त लग रहा था कि एक पॉइंट था जब हसनैन ने वाज ऑन अ हैट्रिक एंड विकेटें ऊपर नीचे गिरी थी, एंड देन this partnership was crucial उस वक्त, because लग रहा था शायद they might be able to defend it because they have those fast bowlers with them. Quetta Gladiators की अगर आप टीम की बात करें तो ये नॉक कितना important था in the context of things? देखिए, even when they were losing wickets, their run rate बहुत healthy था. हारिस जिस तरह खेले, even बाबर जिस तरह खेले, उसके बाद जब वो 3 विकेटें गिर गई फिर भी वो रेट से आगे थे, लेकिन they made sure that they kept up with the rate and even sort of gave themselves leeway. तो जब नसीम शाह और हसनैन वापस भी आए तो उन्होंने बेसिकली दे बैटेड देम आउट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन दोनों ने इतना तेज स्कोर कर दिया था कि ज़रूरत नहीं थी कि चांस लें उनके बैटर बॉलर्स पे. अच्छा, एक और बैटर जिसने बहुत इम्प्रेस किया है एंड ही इज बीन इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ इज इफ्तिखार अहमद. अभी एग्जीबिशन मैच हुआ था, उसमें उन्होंने 6 छक्के मारे थे to Wahab Riaz, and he pretty much started today from where he left in that exhibition match, which is why he's also our master blaster for today. इफ्तिखार जिस वक्त आए थे विकेटें गिरी हुई थी, मगर उनके आर्क में थोड़ी सी बॉलिंग हुई. वो शॉर्ट पिच बॉल बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेंथ बॉल बहुत अच्छा पिक करते हैं, और वो जितने क्लीन स्ट्राइकर हैं तो जो उनकी हिट होती है वो अक्सर पूरी ही जाती है. तो छक्के भी मारे उन्होंने, चौके भी मारे, और जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्कोर किया दैट वाज आल्सो वेरी इंप्रेसिव.
Baz, would you say that Ifti मैं उनको कहूँगी because you know उन्होंने अपनी एक cult following उनकी है, Ifti Mania, hashtag Ifti Mania चल रहा था, हमने देखा था. Do you think that he is one of the best strikers of the ball in our circuit? Yes, one of the best, especially I think fast bowlers pe he's probably if not the best, one or two at the top two. जो two shots that he has, जब वो short ball करते हैं तो वो pull मारते हैं और जब आगे आता है तो सामने उठा के मारते हैं. तो वहाब उसकी रेंज में इसलिए आता है क्योंकि वहाब doesn't have any place to go. आज मेरे ख्याल उस एग्जीबिशन मैच के बाद उनको आइडिया था कि मैंने इसको थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर करना है, तो उस बॉल से वो बच गए. जब आखिरी ओवर में शुरू हुए थे तो वो भी लेग साइड से ही शुरू थे और वो सेटअप था मिड विकेट या सामने मारने का. उसको मेरे हिसाब से एंड ओवर्स में आपको वाइड यॉर्कर, इवन इफ यू आर राइट आर्म पेसर, उसको वाइड यॉर्कर करने पड़ते हैं उसकी रेंज से बाहर निकलने के लिए. ये तो बात आपने बहुत अच्छी की और बिल्कुल सही की है, बिकॉज वो चीज़ आई मीन ही पूरा एक साल देख ले अरूज उनका, जिस तरह से इवन दैट गेम अगेंस्ट इंडिया इन द वर्ल्ड कप, एंड इतनी डिबेट चलती है अराउंड हिज एज एंड all of the other things that are being talked about, but the fact remains that he can hit it clean. And he did. 50 from 34 and he hit a few balls which went a long way. And again जो बाजिद ने बात की कि उनका आर्क जो है वो वही है, क्योंकि वो शॉर्ट बॉल पे बहुत क्विक हैं, चाहे कितना भी पेस हो, और वो चूंकि क्रीज में डीप चले जाते हैं, बैक एंड अक्रॉस हल्का सा जाते हैं, तो वो लेग साइड को ज़्यादा नहीं वहाँ से ड्रैग करते हैं, वो सीधा ले जाते हैं जो बॉल थोड़ा सा फुलर होता है. वही वाली बात कि यहाँ पर अगर उनको बॉल की जाए, इफ ही कैन सॉर्ट ऑफ bring up all that pickup shot becomes even more dangerous. So shame for them that they couldn't get over the line, मगर जितना स्कोर हुआ वो courtesy इफ्तिखारी था. पेशावर ज़ल्मी जो है आज मैच जीते, बैटिंग उनकी अच्छी हुई, बट द मैच वाज एक्चुअली सेट अप बाय देयर बॉलिंग. वहाब ने भी आज बेहतर बॉलिंग कराई इन कंपैरिजन टू द लास्ट फ्यू गेम्स. उस्मान कादिर आल्सो बॉल्ड रियली वेल. लेट्स हैव अ लुक एट द फॉल ऑफ विकेट्स ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स. प्रेशर काफ़ी बिल्ड हो गया था तो चांस लिया गप्टिल ने. बॉटम ऑफ द बैट बॉल बल्ले पे आ नहीं रहा था, लेकिन लेंथ बहुत अच्छी रही थी पावर प्ले में. फिर उस्मान कादिर 2 लेग स्पिन, एक डुगली, टिपिकल लेग स्पिनर्स विकेट. फिर ये तेज़ ज़रा किया, नवाज को भेजा था पावर हिटिंग के लिए लेकिन कामयाब नहीं हुए. ब्यूटीफुल स्लोअर वन यॉर्कर एंड डिफीटेड सरफराज विद अ लवली डिलीवरी. How good was Peshawar Zalmi at the top, Aruj? With the ball, fantastic. They set the game up, and sometimes it's almost a matter of you put the pressure on and somebody else reaps results in terms of wickets. And their power play was fantastic. Arshad Iqbal, Wahab, both brilliant. And then for Usman to follow up with what he did was fantastic. और जिस तरह बाजिद ने भी पहले बोला कि that's why they set the game up. Because Quetta was then eventually playing catch up. He got the ball to nip off the surface, but it was the hard length into the surface which left the Quetta batters all ends up, and it was actually a wonderful spell of seam bowling. Yeah, I mean ये जो changes हो रहे हैं, पिछले मैच में मैंने देखा था जो changes थे वो अच्छे थे. They worked for Karachi Kings. आज भी Arshad Iqbal was brought in, and then you had Usman Qadir coming in as well. तो लग रहा है कि teams are able to आहिस्ता-आहिस्ता work out what is required in what conditions. हाँ, और इंटरेस्टिंग ये है कि अभी तो कराची ले गया, अभी जब लाहौर जाएंगे या पिंडी इस्लामाबाद जाएंगे वहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट होंगे. तो द ब्यूटी ऑफ हैविंग 4 venues इज दैट यू हैव 4 different pitches, 4 different venues which play differently. तो जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे शायद ये कॉम्बिनेशन या ये लेंस ना चलें. Exactly, different venues require different things, but thank you so much, Aruj, for joining us. On that note, we'll be taking a short break, and when we do come back, we'll be joined by none other than Nick Knight. Back on the pitch side show, and Peshawar Zalmi doing just enough. They had Jimmy Neesham and Rohman Powell with that partnership to take them over the line, and now they've got points on the board as well. I've now been joined by Nick Knight. Nick, how impressed were you with Peshawar Zalmi today? Yeah, very much so. I was kind of impressed with both sides in some ways. I mean,
Quetta obviously will look back and not enough runs on the board. I thought they fought hard. I thought there were interesting moments in the game where the game flowed one way then the other. I thought the couple of changes they made for Zalmi were good. I mean, you were interviewing Usman Qadir. He obviously had a major impact in the game. I thought Dasan Shanaka, yeah, he's not going to hit the headlines with what he does, but I think he will add something to that team. So I think they picked a better side than they've picked before. In the tournament, and I've really enjoyed the watch. I really enjoyed the game because, as I say, it could have sort of gone either way, and there were key moments that I'm sure you've discussed already. Talking about key moments, Mohammad Hasnain, the way he bowled, got those 2 wickets, literally was on a hat-trick, and then you had somebody like Naseem Shah from the other end. Look at Quetta Gladiators, that pace duo is always going to be handy. What impressed you about Mohammad Hasnain today? Well, what impresses me is not necessarily the pace, because I know he's got that. What impresses me when I see the players like Shah and Mohammad Hasnain is how consistent can they be and what's required for the team. I mean, Baz will tell you, you know, he did the pitch report. I think this was always a pitch where you've got to bowl at a good length. Can you hit the top of off stump? And he can now do that more often than I think he's done in the past. So his captain's come on and said, this is the job we want you to do. Can you do it? Answer big tick, yes, I can. And I can do it in partnership with Naseem Shah. And we can almost sneak our way through the deep forest that's ahead of us, and we can find a way through. And they almost did it together. So I've been seriously impressed. Consistency for me is what I'm looking for from my bowlers. Not just pace. They've got the pace. They can bowl the Yorkers. They can bowl the slow balls. Can they do it consistently, what the captain asked for? Yeah. Well, they've been doing it consistently, and they've been doing it consistently with pace, which is why Mohammad Hasnain bowled the fastest delivery of today. He talked about his consistency, and it's been just that short of a length actually there which has been so good. The ball, even when it's angling across that short of length and with pace, that makes it so much difficult on a pitch where the ball's not coming in. Baz, Mohammad Hasnain or even Naseem Shah, we spoke about Naseem Shah the other day and how he seems to have matured over the years. What about Mohammad Hasnain? You know, he's also somebody who's gaining a lot of experience by playing in all the leagues around the world, and just generally, I mean, do you think he's also sort of matured in his cricketing journey? In his cricketing journey? I tell you what, I think he's quite mentally tough. He's had setbacks in saying that his action was questioned and he had to go back. And sometimes when you have that, you don't really come back as well as he has done. And even with that remodeled action, he's still got his pace up. He's actually become a much better bowler in terms of the consistency that he has. And you look at him and he seems as if somebody who's enjoying his cricket, but he takes on the pressure, takes on the challenge. I think he's quite mentally strong, because otherwise he would have fallen into in sort of oblivion, really, because he's been in and out of the team as well. And then once that comes back, that it is quite a harrowing thing when you get called for chucking and then you have to remodel your action. Not many players can then come back at the same level. I think he's got a bright future ahead. That's a fair point, actually, because when you look at that Pakistan attack, the top three have always been Naseem Shah, Haris Rauf, Shaheen Shah, and he's always sort of in that second batch of bowlers that Pakistan has. But he's certainly a good one, and that's why he features in our stat attack today. Well, this is pretty much indicative. He's features in the best bowling figures of the HPL PSL 8 so far. Ehsanullah is right at the top. It was that magnificent 5-wicket haul that he got up against Quetta Gladiators. But just look at the amount of runs that he's given. Only 13 runs given and with 3 wickets, and bowled a maiden as well. I mean, how many times do you hear about that in T20 cricket? Right, that was the stat attack for you. Right, we've seen some good catches being taken today in today's match. We've seen them in the previous match as well. And today we have a mix prepared for you. So let's have a look at the safe hands.
Now this was quite simple. It was a poor shot, and it was nicely out. Jason Roy at mid-off. First delivery from Hasnain, maybe just going across the line, but the length was perfect. This was quite a good catch at third man. At third, comes really quickly. Naseem Shah makes sure that he's there for his other fast bowler. And it has gone flat, it's that gone quickly, and he's reacted really well at third. And this was hit high and long, and nicely and comfortably taken. The judgment very good. Yeah, some good catches being taken there, but Quetta is going to reflect on this game and where they went wrong. Sarfraz Ahmed mentioning that his bowling was not up to the mark today. Mohammad Nawaz slightly on the expensive side, went for a lot of runs in those 3.3 overs, but I'm sure they have a chance to redeem themselves. Now, time for another breather, and we'll be back just in a bit. Well, Quetta Gladiators almost made a match of it at one point in the game when Hasnain was taking wickets. He took 2, he was on a hat-trick, and then you saw somebody like Naseem Shah as well with that Yorker. So they got those wickets, but then slightly more expensive. The spinners, you've got to say, Kes was expensive. 41 runs, and then Nawaz as well going for 13.71 runs. And that perhaps was one of the factors that Sarfraz Ahmed was alluding to. It's always interesting when you make decisions as a captain and you sort of look back and say, oh, in hindsight, this was better or that was better. Nick, I mean, Sarfraz using his bowlers, utilizing his bowlers, do you think he could have perhaps done anything differently? Yes, but I think we've got to be brutally honest here. 154 was always probably just under par, so you were always up against it as a captain. You're always trying to find your best resources for the best time. And look, I was on commentary, I think it was the 13th over, and I was on with Aruj, and we were debating. I just felt there was the time. I think at that point, he'd still got 2 overs apiece from Hasnain and Naseem Shah. And I just felt, you get a feel for the game when you commentate. You just get a feel for what might happen next. And for me, it was just a given that you go to one of them, if not both of them. Now, he went to Hafiz from the far end for 1 over, because he hadn't bowled his fifth bowler at that point. And then he went Odean Smith from this end. So he bowled 5th over from one end, 5th bowler, then 6th bowler. And he still had Hasnain, and he still had Naseem Shah. And I just felt he missed a trick there. I just felt that was the moment before he went to his 5th bowler and 6th, then just run out of overs and then fill at the end. I felt he just almost went, you know, this game might just go a little bit further, so I'll fill it out for an over or 2 and then go back to them. I just felt that was the wrong time to do that. I mean, he saw it differently, and it might have worked for him, but I just felt that there was they got just a grip of the game and they just released it there in those 2 overs. Yeah, he is going to look back and, look back and see how he could have done it differently or utilized his bowlers differently. But we've seen some aggression today. The fast bowlers always showing a bit of aggression. Seen that with Mohammad Amir in that game against with the Karachi Kings playing. And today, Naseem Shah, you know, he's been one of the stars of Pakistan cricket, and he's always out there with a bit of spice and always showing a bit of emotion out on the field, which is why he features in our Masaledar moments of the day. Pretty nice send-off to Rahman Powell, Bazit, when you can pretty much see all the emotions and the passion flying through Naseem Shah. Yeah, once you bowl such a great delivery, you've got to have a send-off. It was beautiful delivery. Just a bit of tail back in. And yes, he is the new pin-up boy. But sometimes, you know, that's when
we're just referring to it. That was after the moment we've just described here, where they'd gone to the 5th bowler, 6th bowler, then he get called into the attack. And I think the emotion that you saw there is a little bit of that. Give the ball to me and let me make a change, a difference in this game. He got the ball and he did. You know, there was still a moment there where they were back in the game. And I think sometimes when players show that emotion, it's not just individually, I've got a wicket, I bowled a brilliant ball, it's a Yorker, perfect for me, thank you very much, everyone's clapping me. It's not so much that. It's like, do you know what? That's a key moment in the game and we're back in it. And I think sometimes the way players show themselves off actually shows where the team is as well. And I thought that was a sort of key moment in the game. I just felt it was a fraction too late. Yeah, he gave Sarfraz Ahmed gave him the ball and he wanted a wicket out of him, and that's what he got. That's why we saw that emotion. But just in terms of today's game, it wasn't the home side wasn't playing today. Karachi Kings, they won their game yesterday, but a lot of fans came out to see, of course, their star player Babar Azam. But let's find out from them if they enjoyed today's encounter. मैं बेसिकली क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहा था और सीज़न 1 से ही करता हुआ आ रहा हूँ बिकॉज ऑफ सरफराज। अनफॉर्चुनेट है आज हार गए, लेकिन आई थिंक इनको अपनी बैटिंग में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पहले तो इन्होंने शुरू में बैटिंग जो थी वो उन्होंने इतना स्टार्टअप अच्छा नहीं लिया था, उसके बाद जाके थोड़ा आगे फिर इफ्तिखार थे। क्वेटा जो थे, क्वेटा में इफ्तिखार ने अच्छा परफॉर्मेंस दी, उन्होंने माशाल्लाह 6 मारे, 4 मारे। पेशावर पिछला मैच हार चुकी है और अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कमबैक किया और हमने उसको विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैच देखने आए थे हम लोग, पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे और पेशावर ज़ल्मी को वैसे मैं सीज़न 1 से ही सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन इस बार स्पेसिफिकली हारिस और साइम अयूब की वजह से मैं उन्हें सपोर्ट कर रही थी। दोनों टीम्स मेरी फेवरेट हैं और काफ़ी प्लेयर्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे ज़ल्मी में हो गया, बाबर आजम हो गया और क्वेटा में सैफी भाई अपने कप्तान है। सारे सितारे हमारे और हमारा मुल्क खेल रहा था, सरफराज लोकल बॉय थे, हमें उनको सपोर्ट करना था। बाबर आजम के सब फैन हैं, ही इज़ आवर कैप्टन। तो बहुत अच्छा मैच था, वी एंजॉयड इट थॉरली और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि जो भी जीते, वी आर हेयर टू सपोर्ट क्रिकेट, वी आर हेयर टू सपोर्ट पाकिस्तान। The loyalty is still pretty much there. Fans have been supporting their respective teams from Season 1. That's what we've seen in the rig side view. Thank you so much, gentlemen, for your thoughts. It's always a pleasure to have you guys there. And let's have a look at, before we go, let's have a look at the points table. Just a quick look to see where Peshawar Zalmi stands now after this win. They are number 2 on that table at this point of time because they have won 2 of the 3 games that they've played. They're sitting on 4 points. Multan Sultans are leading the way with 6 points. And Quetta Gladiators, well, they definitely need a win under their belt because they've lost 2 games out of the 3 they've faced. Right, Lahore Qalandars lost their game yesterday against Karachi Kings, but they have a chance to redeem themselves, and that game will be again against Quetta Gladiators, who will be looking to secure another win. Great fun today, as always, bringing you all the coverage. A fantastic game as well. Saw some great cricket, exhilarating cricket. As always, the HPL PSL has truly, well and truly kicked off. But it's time to say goodbye, but we'll leave you with some super moments. Fielder settles and takes it. Pulls him, doesn't pick it, it's straight through him. Bowling! Zingers alight here. No man's going to catch this. Stunning little swivel hook. And he puts it through the offside. It's in the air, he's hit it straight to mid-off and the first wicket falls. Hit down to third and it's taken. Oh, clean!